Hello, beautiful people. I hope you're all fine and doing well. This is Umair Lateef and welcome back to my channel. तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आप वीडियो में देख रहे होंगे एक बड़ा स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ। मेरी बेटी है मेरा, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वो लोग आने वाले हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा बिज़ी हो गया था लाइफ में और कुछ एक जिसे कहते हैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट नहीं कर सका। और एक लंबा अरसा जो है ना, काफ़ी देर तकरीबन 7-8 महीने में सीन से ऑफ रहा हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि यार दोबारा अपने चैनल को रनिंग में लाया जाए। तो एनी हाउ, आज मैं जिस वीडियो को रिएक्शन करने वाला हूँ उसका नाम है ग्रेविटास प्लस इंडियाज़ अचीवमेंट्स एट 75। तो मतलब 75 ईयर्स हो गए हैं इंडिया पाकिस्तान दोनों को आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंस हुए और पार्टीशन हुए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 75 ईयर्स में इंडिया ने क्या कुछ अचीवमेंट्स जो है ना वो की हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। It's the eve of India's 76th birthday. 75 years ago, at midnight, India made a tryst with destiny. An independent India was born. It was drained, divided, but desperate to make it on its own. How has the journey been so far? Tonight, we'll look at India's achievements at 75, the success stories at 75. Hello and welcome to Gravitas Plus. I'm Palki Sharma Upadhyay. There's so much to talk about. It's been a stupendous journey of 75 years. We decided to start with the economy. The British Crown looted $45 trillion from India. From raw materials to the Kohinoor diamond, the British took all. They also exploited all. The thumbs of Indian weavers were cut off. Indian peasants were crushed. The brightest jewel in the British crown was left with the prospect of a dim future. Britain deindustrialized India. At the time of independence, India's per capita income was 230 rupees. That's $2.89. The average income was 1/15th of what an average American earned. There was poverty, hunger. The task before India was to lift itself, and it did. There was rapid industrialization, 3 successful revolutions, green, white and blue. India opened itself to the world, globalized its economy, privatized its banks. 75 years later, India is one of the world's leading economies. From less than $3, India's per capita income has grown to almost 2,000. Its share in the world GDP is 3.28%. 7 decades back, India was an import-dependent country. Today, more and more global companies are making in India, and Indian companies are making a mark globally. India is becoming a force to reckon with in more ways than one. Which brings us to geopolitics. India successfully navigated the Cold War. It became a political force for decolonization. India liberated Bangladesh. It reached out to Africa, successfully dehyphenated Israel and Palestine, stuck strategic partnerships with the Gulf. India isolated Pakistan. When India and Pakistan had a dogfight, the world supported India. When Pakistan tried to make an issue out of Kashmir, the world again supported India. Today, world powers see India as an important partner, a leading voice in multilateral forums, the face of peace, the loudest cheerleader of counter-terrorism. Of course, the journey has not been easy. Right after independence, India made some bad decisions, like letting go of a Security Council seat. Then there were security challenges. 1948, Pakistan's incursion into Kashmir. 1962, the war with China. 1999, the war in Kargil. The current standoff in Ladakh. But on every such occasion, India showed the world that it's capable of defending itself, capable of resisting any attempt to redraw its map. India has taught the world tolerance, universal acceptance, and none of it was easy. You may recognize this man, Winston Churchill, Britain's former Prime Minister. Churchill had dismissed India's experiment with self-governance. Why? Because India is socially diverse. 22 languages, 20,000 dialects, numerous religions, numerous regions. Churchill said, India is merely a geographical expression. It is no more a single country than the equator. He was convinced that independent India won't be able to stay together. Well, Churchill was wrong. India remains united and grows stronger. Its success as a secular state has surprised many. Of course, there have been ups and downs. India survived a partition, the Babri Masjid demolition, Operation Blue Star. It's what followed, the Gujarat riots. But which country does not have rough patches, and which country can claim to be this diverse? In the initial years post-independence, it was tough keeping the country together. One of the big challenges was public health, or the lack of it.
In 1947, the average life expectancy in India was 32 years. There was rampant spread of communicable diseases like malaria and tuberculosis. In 1947, India registered 75 million cases of malaria. Its total population was 330 million. So almost 23% of the population had malaria. By 1964, the numbers came down. Then there was polio. Until early 1990s, every day around 500 children were getting paralyzed. India fought polio and declared itself polio-free by 2014. Today, India's polio eradication is a case study of healthcare success for the world. India also eradicated smallpox, and as we speak, India is running the world's largest vaccination program. India's healthcare system is one of its biggest achievements. We hardly appreciate it because there's a lot that's not right. But when you look at where we started, the achievements look astounding. Around the time of independence, 2,000 mothers died for every 1 lakh childbirths. 2,000. Today that number is down to 103. Also look at the increase in life expectancy. It's over 100%. This is one of the most important indicators of human development. Today, India is called the world's pharmacy. It exports medicines to 200 countries and regions. Another feather in the cap is technology. India decided to go to space just 17 years after independence. It set up INCOSPAR, or Indian National Committee for Space Research. India's first rocket launch happened in 1963 from a town called Thumba. The rocket parts were transported on bicycles and bullock carts. Look at this photo. This is how India's space journey began. Today, India is a well-established space power. It has reached Mars. Today, India is unfurling the tricolour in space to mark 75 years of independence. Do you know India was also the first country outside the permanent UNSC members to test a nuclear bomb? And it did this despite the world's best efforts. Reports say the CIA killed an Indian scientist to roadblock the nuclear journey. The US had even deployed a satellite over India to spy. So work on the nuclear test was mostly done during the night, and equipment would be returned to the original place in the morning to evade detection by American satellites. Code names were used. The thermonuclear device, for example, was placed in a shaft named White House. On the 18th of May 1974, India took the world by surprise. It became a nuclear power. The operation was called Smiling Buddha. The director of India's Nuclear Research Institute, Raja Ramanna, told the then Prime Minister Indira Gandhi, "Buddha has smiled." How did India achieve all of this? 1. Democracy. 2. Literacy. From the very first day of independence, every adult in India had the right to vote. And just for reference, it took the US 150 years of independence to adopt universal adult franchise. In the last 75 years, India's population has grown from 370 million to 1.4 billion. States have been reorganized, but the sanctity of elections has never been compromised. They're chaotic, yes, they're controversial, but they're held without fail every 5 years. Voters queue up in front of booths. Some cast their vote, some vote their caste, but all of them exercise their right. And there have been dark periods. Like the emergency in 1975, then Prime Minister Indira Gandhi was facing protests. Her future in office was uncertain, so she declared a 22-month-long emergency. Democratic institutions were attacked, politicians were locked up, the press was censored. But it did not last. And that's the thing about India's story. It's far from perfect. There's corruption, there's inefficiency, and everything else that we keep complaining about. Yet, India's democracy has delivered. It has alleviated poverty, built world-class infrastructure, and sent Indians to space, to win gold medals and beauty pageants, and to lead the world's biggest companies. Literacy has played an important role here. When India became independent, 4 out of 5 people could not read. The literacy rate was around 12%. For India to grow, it had to educate its people. It made free education a fundamental right. Schemes like Sarv Shiksha Abhiyan and midday meal ensured that children found their way to schools. India expanded its educational infrastructure. In 1947, India had only 28 medical schools, 4 dental colleges, and 33 engineering colleges. Look at the numbers today. The India that could neither read nor write is now the world's biggest talent pool. Top engineers, doctors, Indian origin CEOs all bear testimony to India's growth and transformation. Today's India is home to 1.4 billion people. It is progressive, yet rooted in its culture and values.
It is home to the world's youngest population, the world's largest democracy, the world's largest film industry, the world's largest diaspora population, the second largest road network, a leader in climate action, a market that every company wants to enter, and a strategic force that every government wants to partner. Today, as India celebrates its historical achievements, it also has a clear vision of the future. This is India at 75. ऑलराइट गाइस, काफ़ी लंबी वीडियो थी, 9-10 मिनट की वीडियो थी, लेकिन यार मतलब इतनी अचीवमेंट्स इसमें इंडिया की इन्होंने गिनवाई हैं, और मेरे ख्याल से तो ये अभी भी कम है, यानी बहुत ज़्यादा होंगी और भी होंगी। मतलब एक वीडियो के अंदर इतने बड़े मुल्क की 75 ईयर्स हिस्ट्री को, जिसे कहते हैं ना, पिरोना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो फिर भी कोशिश अच्छी है, और मतलब बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक। ठीक है, इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है, ओबियसली एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, और सही बोला इसमें कि यार मतलब दुनिया हैरान होती है जो है डाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, इंडिया की डाइवर्सिटी के ऊपर, मतलब इतनी आई थिंक कोई 20,000 लैंग्वेजेस जो हैं कहते हैं कि शायद बोली जाती हैं वहाँ पे, और इतना डाइवर्स कंट्री है फ्रॉम एवरी पार्ट, यू नो, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है। तो मतलब है इतने रंगो नस्ल के लोगों का एक साथ एक छत के नीचे रहना, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो दिस इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट। ठीक है, और मतलब है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ और भी बहुत सारे मसले, लेकिन ये है कि अपने पाथ से जो है ना वो मतलब हटे नहीं। इंडिया की डेमोक्रेसी ने वाकई ही जो है ना वो डिलीवर किया है, और डेमोक्रेसी ऐसी चीज़ है कि इसको टाइम अगर दें आप तो ये डिलीवर करती है आपको, चाहे जैसी भी शक्ल में हो। अब पाकिस्तान में आप देख लें, आपके हमारे यहाँ पे तो तकरीबन 75 ईयर्स हिस्ट्री में से कोई 40 ईयर्स तो यहाँ पे मार्शल लॉज ही रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो मार्शल लॉज में मतलब है कई लोग कहते हैं कि जो मार्शल लॉज में पाकिस्तान ने ज़्यादा तरक्की की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मार्शल लॉज जो हैं उस तरह आपको डेवलपमेंट दे पाते हैं जिस तरह डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, मार्शल लॉ में वन मैन जिसे कहते हैं ना आर्मी होती है, एक बंदा ही जो है वो मुल्क के सफ़ेद और काले का मालिक होता है। डेमोक्रेसी में मतलब है इस तरह चीज़ नहीं होती। ठीक है, और अभी भी आज भी इवन दो पाकिस्तान में भी मार्शल लॉ नहीं है, पिछली 3 गवर्नमेंट्स जो हैं वो लगातार चली हैं, लेकिन फिर भी अभी तक किसी प्राइम मिनिस्टर को अपनी टर्म पूरी नहीं करनी दी गई। मतलब है आप देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी आए, पूरी नहीं अपनी कर पाए वो टर्म। उसके बाद नवाज शरीफ आए, नहीं कर पाए पूरी टर्म। इमरान खान आए, नहीं पूरी कर पाए टर्म, 5 साल पूरे नहीं कर पाए। ऑल्दो गवर्नमेंट्स उन पार्टीज़ की उन्होंने अपना टाइम पूरा किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को भी जो है ना वो चलने नहीं दिया गया। और अब सब जानते हैं पाकिस्तान में मतलब एट द बैक हैंड जो है जिसका हाथ होता है गवर्नमेंट्स बनाने और गिराने में, तो ये लोग तो सब लोग जानते हैं। और आज भी जो है ना मतलब अपनी माजी की गलतियों से सीखा नहीं है मतलब कुछ लोगों ने। तो एनी हाउ, और बाकी यार मतलब जिस फील्ड में भी देखें इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। स्पेस में स्पेस प्रोग्राम इंडिया का जो है वो एक जिसे कहते हैं एग्जांपल है पूरी वर्ल्ड के लिए, मतलब है। और आप देखें बिजनेसेस, इंडियन कंपनीज, इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है, ठीक है, और जो इंडिया की आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स देख लें, आईटी एक्सपोर्ट्स देख लें। ठीक है, तो मैं आज ही एक सुबह भी मैंने एक वीडियो की थी, तो उसमें भी वो मतलब इंडिया पाकिस्तान का कुछ कंपैरिजन दिखा रहे थे, तो उसमें भी वो मतलब कुछ चीज़ें वहाँ से भी मुझे पता चली कि मतलब इंडिया की कितनी टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, अराउंड मोर देन $500 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, 400 समथिंग इंपोर्ट्स हैं, और इस तरह करके काफ़ी चीज़ें। तो मतलब है जो डेमोक्रेसी मेन पॉइंट जो है ना इस वीडियो का ये है कि डेमोक्रेसी जो अगर चलती रहे, चाहे वो जैसी भी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, डेमोक्रेसी अगर चलती रहे तो मतलब है इट कैन डू वंडर्स फॉर एनी कंट्री। और ये ठीक बात उन्होंने कही कि अमेरिका को 150 साल लगे भाई डेमोक्रेसी को अपनी सही शक्ल में लाने में, और तमाम लोगों को मतलब है राइट देने में, उनके फंडामेंटल वोटिंग राइट्स देने में। तो इंडिया ने तो मतलब इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन जो है ये कर दिखाया। ठीक है,
तो और ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब लोगों को ये राइट देना कि वो चाहे किसी को भी चुने, ठीक है, लेकिन वो अपना लीडर खुद चुने। कोई भी बैक हैंड पे कोई ऐसी पावर ना हो जो कि आके उनको मतलब ज़बरदस्ती आके ऊपर बैठ जाए, ठीक है। तो जो पावर होती है ना मेन, वो लोगों के पास ही होती है। यानी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी यार। मुझे तो पूरी मतलब इसके अंदर चीज़ें इतनी सारी थी कि मुझे तो जहन में भी नहीं आ रही कि मैंने क्या क्या इसमें देखा है। तो बहुत ज़बरदस्त मतलब अचीवमेंट्स हैं ईच एंड एवरी फील्ड, हर फील्ड में। जो कंपनीज़ हैं, इंडियन कंपनीज़ हैं, मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, यहाँ पे इवन हम डील करते हैं इंडियन कंपनीज़ के साथ, ठीक है। तो हर फील्ड में जो है ना वो बहुत आगे निकल गए हैं, और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी लैग कर रहा है, पीछे है काफ़ी। तो और मेन रीज़न यही है, टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट द करप्शन। जो है करप्शन हर जगह पे होती है, कोई अमीर मुल्क हो या गरीब हो, करप्शन हर जगह पे होती है, ठीक है। ये एक तसलसल जो होता है ना, एक कंटिन्यूटी होती है जो सिस्टम की, वो मेन चीज़ होती है। तो वही यहाँ पे जो है ना वो लैग करती है, कि सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता। तो पीछे से एक जो है ना बंदा वो डंडा लेके आ जाता है और पूरा सिस्टम जो है ना वो बर्बाद कर देता है। एनी हाउ, कंग्रेचुलेशंस। आज जो है वो नेशनल इंडिपेंडेंस डे भी था इंडिया का, कल पाकिस्तान का था। तो मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस भी आप लोगों को मुबारक हो। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और पीछे मेरी बेटी ने जो है ना वो उधम मचाया हुआ, तो इसलिए मुझे थोड़ी वीडियो शॉर्ट करनी पड़ रही है वरना मैं थोड़ी लंबी करने वाला था। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम।